Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। 9th International Micro Irrigation Conference begins in Aurangabad. Minister for Water Resources Nitin Gadkari says micro irrigation is a game changer in agriculture development. Benchmark domestic stocks close almost flat, and British Prime Minister Theresa May to face no confidence motion following Parliament's rejection of Brexit deal. 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन औरंगाबाद में शुरू हुआ। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई कृषि विकास में भारी सुधार ला सकती है। प्रमुख घरेलू सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के हुए बंद, और ब्रेक्सिट समझौते को संसद द्वारा नामंजूर कर देने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगी। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई कृषि विकास में भारी सुधार ला सकती है। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 दिन के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए नई तकनीक, आधुनिक नवाचार और नए अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री गडकरी ने कैनाल सिस्टम की जगह पाइप सिस्टम के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण सुधार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उम्मीद है कि सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों से समझौते होंगे। अपने मंत्रालय के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है और ये उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन कितना इम्पोर्टेंट एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वो लगता है पहलू। देखिए सोनू, ये माइक्रो इरिगेशन आजकल बहुत अहमियत इसको माइक्रो इरिगेशन को काफी अहमियत देनी पड़ती है, क्योंकि जो बड़ी इरिगेशन होती है माइक्रो इरिगेशन, इसमें आपको काफी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। माइक्रो इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इसमें जो है वो पाइप बिल्कुल सीधा हर पौधे के पास जाती है, पानी वैसे ही जाता है। और ये इससे हमने काफी सीखा है इजराइल से। इजराइल में बहुत माइक्रो इरिगेशन की एडवांसमेंट हुई है, वहां नई नई तकनीकें हैं, और भारत और इजराइल में काफी इसके बारे में कोलैबोरेशन हुआ है। तो आपको लगता है कि इससे न सिर्फ जैसा आप कह रही हैं कि खर्च कम होता है, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जो वेस्टेज है वाटर की वो भी नियंत्रित होती है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, पाइप हर पौधे के पास जाती है, पाइप, और जब पाइप का पानी जो है हर पौधे के पास जाती है धीरे से, और कम पानी इस्तेमाल होता है। और मतलब ये बहुत, ऐसे आपने कहा, बहुत एफिशिएंट है। और इसमें ये है कि बहुत बड़े जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें कि बहुत एरिड एरियाज में, जैसे मैंने इजराइल की बात की, यहाँ महाराष्ट्र में भी, जहाँ औरंगाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारी बहुत बड़ी ट्रैक्ट्स हैं रेनफेड एरियाज की, और वहाँ मतलब बारिश से ही आपको ये कोप करना पड़ता है। तो ये माइक्रो इरिगेशन ऐसी जगहों के लिए बिल्कुल आइडियल है। Just briefly, is the subsidy meant to pay for the laying of the pipe to the water source and straight to the farm? Well, you know, nowadays they are giving a sort of direct subsidy to the farmers for irrigation as well as other products, and that would be covering not probably just irrigation. It might be covering other inputs as well. So this is a gradual change that has come about in the system of direct benefit transfer.
अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 3 अंक बढ़कर 36,321 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4 अंकों की तेजी से 10,890 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.02% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.14% की तेजी दर्ज हुई। Equity indices today ended marginally higher after a seesaw session tracking mixed clues from the global markets amid geopolitical uncertainties. The Sensex at the Bombay Stock Exchange added 3 points to settle at 36,321. The Nifty at the National Stock Exchange also ended up by 4 points at 10,890. The mid-cap index fell 0.02%. The small-cap index rose 0.14%. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On the BSE, 1,225 shares rose and 1,354 shares fell. A total of 146 shares were unchanged. In the Sensex pack, Yes Bank, IndusInd Bank, Infosys, ICICI Bank, TCS, SBI, Reliance Industries, ONGC, Axis Bank and NTPC rose by up to 2.7%. On the other hand, losers included Bharti Airtel, Bajaj Finance, Asian Paints, Vedanta, HCL Tech, HUL, Hero MotoCorp, Kotak Bank, HDFC Bank and ITC declining by up to 1.4%. Among the sectoral indices on the BSE, oil and gas was up 0.7%, IT up 0.7%, and healthcare ended up by 0.4%. While telecom closed down 0.8%, FMCG was down 0.7%, and metal ended down 0.7%. Sushma, I think before we put a question across to you, we are joined by Arvind Pruthi, consultant and advisor with Abira Securities. Arvind ji, a very warm welcome to you in Market Mantra. Thank you. Well, after the rise by almost 465 points yesterday, only 3 points were added to the Sensex score today. Was there consolidation? What was the behavior of the market traders today? I think, the kind of rally that we saw yesterday, it was expected that the market had to take a breather because there was no such factors overnight that could have propelled the market to new highs or, further gains. I think I would term this as a consolidation in the markets. मिस्टर पृथ्वी, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ब्रीदर है और अंडरलाइंग सेंटिमेंट अभी भी भारतीय बाजार का पॉजिटिव है? क्या आप देखते हैं, कौन से फैक्टर्स आपको लगता है कि बाजार के लिए अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? I think, already the inflation figures have come to quite a, low, even probably less than what the RBI was targeting. So I think, markets probably are somewhere factoring that in the next RBI meet, there could be a, rate cut. That's probably, driving the markets up. But having said that, I think, we have run, I would say that if the markets sustain over a longer period and move gradually on the higher side, it will be better for the markets. Such, sharp rises are generally not sustainable in the markets. मिस्टर पृथ्वी, अगस्त में 39,000 तक पहुंच गया था सेंसेक्स, अभी 36,000 पे है, तो कंपेयर टू दैट अभी भी हम काफी नीचे हैं। क्या लगता है आपको ये बजट जो आने वाला है 1 फरवरी को, वो कितना बड़ा उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार को? क्या उसमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार टैक्सेस को लेकर? इनफैक्ट as far as this budget is concerned, I think that it is going to be a populist budget just before the elections. And populism is never good for the markets because ultimately, whatever stops, whatever relaxations, whatever freebies that you pass on to the people, it is ultimately the taxpayers' money. So whether, you're doing it this way or that way, I think this kind of, populism doesn't pay in the long run. So I don't have too much of expectations from the budget. Rather, I would be happy if there are no, if it is a mediocre budget wherein there are not much of announcements, I'll be too happy with that kind of a budget. Arvindji, do you mean that there are not sufficient support levels for the Sensex and Nifty at this score? Do you expect the markets to fall with some degree of negative sentiment ahead of the budget announcement? I feel the markets are going to consolidate.
I'm afraid we lost Arvindji briefly. We'll put the question across to Sushma. Sushma, it's quite relevant, I think, to understand if the market levels can be sustained because the market only went up by 3 points today. Well, I think, we are now, just barely 2 weeks from the budget. And so there is always a spell of volatility. And yes, yesterday, of course, there was a spike, as Mr. Pruthi also mentioned, that it is this kind of spikes are unsustainable. But it is the general normal, I would say, volatility that comes before the budget, and it reacts. There's a reaction to every news. Yesterday, of course, there was the news that inflation was very low, and there were expectations of a rate cut by the RBI, so the market was cheerful. Today, there's no such news, so we are sort of going by global cues. So there is this kind of, I think, ups and downs we can expect right up to February 1. मिस्टर प्रूथी हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिस्टर प्रूथी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं दिसंबर क्वार्टर की, उनको आप कैसे व्यू करते हैं और आपका आगे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है सेक्टर वाइज? I think, if you look up at most of the results, especially in the IT, I think, we have got results better than the street estimates. So going forward, I feel the trend has been set up, and I feel most of the IT companies will deliver good margins and good numbers for this quarter. Otherwise, also, I feel, because of the low base or, the earlier numbers not being very great numbers, this time I feel, we'll have decent numbers for this quarter. I feel that will be one of the factors which will drive the markets up other than the pre-budget rally factor. Arvind, just looking at the interest rates, do you think that a possible rate cut will be passed on to the consumer? Because there have been many complaints in the past that despite the rate cut announced by the RBI, the benefit is not passed on to the consumer, and that impacts consumption to a great extent, especially impacting sectors like FMCG and auto. I think, the RBI has been pretty proactive on that front, and they have been, bringing in new forms wherein, the banks are being forced now to cut the rates and pass on the benefits to the consumers. So I think this time, if there's a rate cut, sentimentally, yes, it is going to be positive for the markets, and otherwise also, I feel, the banks will be forced to pass on those benefits to the consumers. मिस्टर प्रूथी, अभी जो एनवायरनमेंट है कि रेट कट एक्सपेक्टेड है, एंड जैसा आप कह रहे हैं कि उसके ट्रांसमिशन की भी चांसेस काफी ज्यादा हैं, एंड जैसा हमारी अभी स्टूडियो एक्सपर्ट कह रही थी कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में है, अर्निंग्स के आप कह रहे हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो 2018 में हमारे बाजार से हट गए थे और नवंबर से ही उन्होंने फिर यहाँ पे आना शुरू किया है, 2019 में आपको क्या लगता है उनका क्या रवैया रहेगा? I think, the politics and the elections is going to play a very major, role in deciding for them. So normally what the past is, what we have seen is that pre-budget is always a time for stock pickers to, pick up quality stocks for a decent run. Whenever, whether this government comes or somebody else comes, I am very confident that post-elections the market is going to touch a new high and you will see a decent rally. So from that perspective, I think the FIs should be coming back to the Indian market. तो आपको लगता है कि ये जो रैली है ये ब्रॉड बेस्ड होगी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत हमने गिरावट देखी वर्ष 2018 में. अब आपको लगता है कि जो वैल्यूएशंस हैं, लो प्राइसेस हैं 2018 की गिरावट के बाद, और जो सरकार कॉन्स्टेंटली पुश दे रही है इन सेक्टर्स को, उनको देखते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2019 में? Absolutely. This is what I have been all along saying, that we have seen a very, very decent correction, very sharp correction in the small caps and mid caps. And remember one thing, there has been certain changes by the SEBI with regard to the mutual funds, how they cover up, where do they invest. So sectorally, now there is a much broader theme of small caps and mid caps that are getting a coverage. I was given to understand, the new definitions of, small caps from the SEBI perspective. And so there are a much larger number of companies now that gets covered in that bracket. So I feel, this is the time probably to identify quality mid caps which have the potential to be, multi-baggers in the coming times. I would definitely be looking very minutely in this sector. Though it will be difficult for, retail investors to identify such stocks with that precision. So ideally, they should go through the mutual funds only. But yes, small caps and mid caps is a theme which will again be back in the flavor. Arvindji, how would you advise investors
who have traded in telecom stocks which are debt burdened. The telecom index was down 0.8%. See, the word debt is now scary. Whether it is telecom sector or the infrastructure or the power sector. So wherever there has been an overhang of the debt, I have my doubts whether that sector will perform in the near future. I would rather stay away from the debt companies. You have a hangover of the debt. I would stay away from those companies. Thank you, Arvindji, for giving us your views on market performance today. That was Arvind Pruthi, consultant and advisor with Abira Securities. चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अन्य एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। निवेशकों में इस बात को लेकर चिंता थी कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था में फिर गति लाने के लिए कितनी आक्रामक नीतियां अपनानी होंगी। जापान का निकेई सूचकांक लगभग 0.6% की गिरावट में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की तेजी में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख सूचकांकों में कमजोरी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.1% की गिरावट पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की मंदी चल रही थी और फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। Moving on to the US market, US stocks rose yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.7%. The S&P 500 climbed 1.1%, while the Nasdaq Composite Index surged 1.7%. Sushma, how do you view especially the Asian markets and China being impacted by the US-China trade war? There have been experts who have said that the actual and notional loss in the Chinese market has been more than $1 trillion. So what does it really mean that there are investors who are turning apprehensive on how aggressive China needs to be in policies to help its economy recover? Well, first of all, I think probably your estimates would be correct that the amount of losses over there. But apart from the US-China trade war, there is a slowing down of the Chinese economy as it is. And that is, of course, so that the US-China trade war has sort of fueled these apprehensions. The real economy. No, it has fueled the worries over the Chinese economy, because the Chinese economy has become, like the US, a kind of engine of growth for the entire world. So now if you have this Chinese economy, which was at one time growing at 9 to 10% every year, is now down to 6.5%, and India becomes the fastest growing economy in the world, it is an area of worry, because it is an economy that uses a huge amount of resources. The reduction in the investments in China leads to a fall in crude oil prices globally, because they are one of the largest oil purchasers along with India. They have large purchases of many, many other commodities. So therefore, a decline in a slowdown in their economy means decline in purchases of resources from all over the world, and that has, of course, a cascading impact. Now, secondly, you have the factor of the US-China trade war. The trade war itself has created a lot of problems. The raising of tariffs by the US makes Chinese products expensive in the US. The raising of tariffs by China on US products makes their products extremely expensive. So you have an inflationary spiral that is going to take place. And plus, of course, there are people, who are talking about India having an advantage. I think there was an article today in one of the papers about outlining the areas in which India can take advantage and, delve into the Chinese market. But I feel this can only be a short-term positivity. सुषमा, जैसा आप कह रही हैं कि इट कैन बी ओनली अ शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी, क्योंकि जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट फिगर्स आए हैं सिर्फ 0.4% ग्रोथ आई है। एंड जो आप कह रही हैं कि चाइना में स्लो डाउन है, उनकी अनाउंसमेंट जो आई, जिसके बल पर कल हमने बाजारों में इतना भारी उछाल देखा कि वहां पे वो स्टिमुलस देंगे, शायद टैक्सेस को लोअर करेंगे। यूएस ऑलरेडी टैक्सेस लोअर कर चुका है एंड इंडिकेशंस है कि यूएस फेड अपना सॉफ्टर अप्रोच रखेगा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। यूरोप में हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी स्लो डाउन है, इसलिए शायद वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन शुरू नहीं होगा। सो आपको लगता है कि वो जो लूजर मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक दौर था वो फिर से वापस आने वाला है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकते, ये तो टेम्पररी फिनोमेना है अभी के लिए। जैसे कि जो सारी जो आप बातें कर रहे हैं, ये ज्यादातर दे आर अ फॉल आउट ऑफ द US-China ट्रेड वॉर।
ये जो अब चीन का तो ये है जो इनकी स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी है, तो अब वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स वापस आए उनके पास, ये ना हो कि इतनी स्लो डाउन हो कि कई इन्वेस्टर्स अब वहां से चाइना से इंडिया आ रहे हैं, जैसे कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में करना चाह रहा है। तो ये तो बहुत कम है, माइन्यूट अमाउंट आई विल से, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है उसका मोमेंटम फिर से शुरू हो। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि लूसर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेरे ख्याल ये टेम्पररी फेज है, क्योंकि यूएस में भी इस वक्त तकलीफें हैं कई तरह की और चाइना में भी है। तो ये और खैर और यूरोप में भी देखने को आ रहा है। यूरोप में ये जो ब्रेक्जिट की जो प्रॉब्लम्स चल रही है लंदन में और यूरोपीय कई देशों में, तो ये मेरे ख्याल टेम्पररी फिनोमेना है। मुझे नहीं लगता कि वी आर गोइंग बैक टू द लूज मॉनेटरी पॉलिसी। इट विल प्रोबेबली अ शॉर्ट टर्म फेज. Do you think that China is trying to replicate the quantitative easing that was practiced by the U.S. Federal Reserve, and they feel that maybe with the downslide of the economy because of the trade war, there would be an upside now with monetary easing and quantitative easing for that matter? I don't know if China will take that route actually, because that's quite a big amount of financing for them to be doing. So I think they'll probably wait and watch and see if the slowing down of the economy continues. Then they may opt for something like that. I don't think right now they have that kind of fears. China, you have to see the size of the Chinese economy also. It's much larger than the Indian economy. I mean, when it's going at 6.5%, it means a huge economy, a huge amount of economic growth. सुषमा, एक पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वर्ष 2019 में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको लगता है कि शायद स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे हम भारत में भी देख रहे हैं कि आरबीआई की बॉन्ड परचेजेस, आरबीआई द्वारा कोई स्टेटमेंट आती है तो बाजार में एक स्थिरता आती है, तो सेंट्रल बैंक्स का रोल बहुत क्रूशियल रहेगा। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये सेंट्रल बैंक्स की इम्पोर्टेंस तो हमेशा रहती है। ये अब कहने वाली बात है कि अभी होगी, ये तो पहले भी था। जब क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हो रही थी तो तब तो सेंट्रल बैंक्स की इम्पोर्टेंस बहुत थी। और अब हमारे देश में सिर्फ ये है कि अभी हमारे देश में तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही है आरबीआई के बारे में, नया आरबीआई गवर्नर आया है, लेकिन फिर तो स्टेबिलिटी आ ही गई और अब चुनाव आने वाले हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होगा। जो रोल था सेंट्रल बैंक का वही रहेगा, और सेंट्रल बैंक का रोल हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है किसी भी देश में, और वो रहेगा। चलते हैं करेंसी की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 71 रुपये 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पिछले सत्र में ये 9 पैसे कमजोर होकर 71 रुपये 2 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ था। धीरे धीरे रुपया थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा है। क्या इसे आप एक चिंता का विषय मानती हैं? 71 रुपये से ऊपर पहुंचा है। नहीं, देखिए, ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये पहले भी, अब 2 महीने पहले भी बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन हुआ था और उसके बाद फिर अप्रिशिएट हो गया था रूपी। अब फिर डिप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है। लेकिन एक बार जब 70 रुपए का जो साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस कर लिया तो फिर बहुत ज्यादा फिक्र नहीं रहा। इट वाज अ साइकोलॉजिकल मार्क। और मेरे ख्याल में ये हमें देखना है। अभी आप आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि डिप्रिसिएशन हुआ है। आईटी जो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उनकी रेवेन्यू इनफ्लोज बहुत बढ़ जाती हैं जैसे ही रूपी डिप्रिसिएशन होता है। सभी एक्सपोर्ट्स के लिए तो सब एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतना एकदम इम्पैक्ट नहीं होता जितना सर्विसेज में होता है। Well, let's now look at our third headline story. British Prime Minister Theresa May will face a no-confidence vote after the Parliament rejected her Brexit deal. Legislators earlier today voted 432 to 202 against the deal, triggering a political chaos that could lead to a disorderly exit from the EU or even to a reversal of the 2016 decision to leave. Soon after the defeat, opposition Labour leader Jeremy Corbyn submitted a motion of no confidence against May's government. The confidence vote is expected to be held later in the night. May has told MPs she will return to the House of Commons with an alternative plan next week, provided she survives the confidence vote. The small Northern Irish DUP party, which supports May's government and refused to back the deal, said it would stand behind May in the no-confidence vote. Pro-Brexit Conservatives also said they would support her. Quite a conundrum that British Prime Minister Theresa May is facing right now. It is not just on what the popular
sentiment is in Britain right now, not to exit from EU, but also how to handle the referendum is already voted in favor of the exit. And there's also the political front where you could have one of their provinces seeking independence through a referendum. Yeah, it's an extremely complex issue in the UK right now. And as you rightly pointed out, I mean, that she has, Prime Minister Theresa May has lost this vote right now. They have rejected her Brexit deal, and she will face a no confidence vote. Of course, as you have also reported, that Northern Irish DUP party, which has really been crucial in her losing that vote, says that we will stand behind her, which is really contradictory, I must say. And even pro-Brexit conservatives say that they will support her. So we really don't know what's going to happen here. But it is definitely, I mean, I must say, put it in very colloquial terms, it's a mess really in the UK. They have voted, the referendum gave the mandate to Theresa May to chalk out a deal to leave the European Union. This is the best deal that has been offered so far by the European Union, and I don't know whether any other Prime Minister, even if she loses the no confidence vote and they bring in another Prime Minister, I doubt if anyone can get a better deal than this. सुषमा, अगर डील नहीं भी होती है, कहा जा रहा है विद और विदाउट अ डील, ब्रेक्सिट का जो डेट है वो है मार्च 29, और अगर बिना डील के ये ब्रेक्सिट होता है तो इट विल लीड टू रिसेशन इन ब्रिटेन. तो इसका भारत पर आपको क्या असर होता दिखाई देता है? देखिए, भारत पर पहले तो हमने सोचा था कि, और सारे ऑब्जर्वर्स जो थे और वहाँ के जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे बहुत खुश थे कि ये अब हमारे लिए थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जो लोग आते थे उनको प्रेफरेंस मिलता था नौकरियों में, और ये हमें ये उम्मीद थी कि अब इंडिया से जो लोग थे इमिग्रेंट्स उनको फायदा होगा, और जैसे स्किल्ड वर्कर्स को. लेकिन वो हुआ नहीं है. असल में जो इनफैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इमिग्रेशन के लिए इंडिया से जो लोग आना चाहते हैं वहां पर, उनकी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है. वीजा रिजीम उनका ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है. तो ये कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ. दूसरी बात ये है, जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारी ट्रेड जो है यूके के साथ काफी इंडिपेंडेंट रही है और यूरोपियन यूनियन के साथ अलग से रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. लेकिन अगर आपके जो इंटरनेशनल बैंक्स और बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत बाकी भी और बड़ी बड़ी कंपनीज अगर लंदन से छोड़ के वो यूरोप में चली जाएं, तो हमारी भी कंपनीज वहां से डील करेंगे. तो ये इनफैक्ट मैं ये नहीं हमारे लिए कोई इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के लिए नुकसान है. Well, let's look at the oil market now. Oil prices today eased, pressured by data showing weakening imports and exports in China that raised new worries about a global economic slowdown hurting crude demand. Brent crude prices were trading around $60.40 per barrel, while WTI prices closed at around $51.70 per barrel when reports last came in. Good news for India? Definitely good news for India, as you know, as long as crude oil prices, global crude oil prices range around $60, it's completely fine for us. And we are one of the largest purchasers of crude oil in the world, and over 80% of our requirements are met by imports. अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर. लगातार तीसरे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए सोने का मूल्य दिल्ली सराफा बाजार में 65 रुपए की वृद्धि से 33,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा. आभूषण निर्माताओं की मांग बढ़ने से ऐसा हुआ. पिछले 2 सत्रों में सोने में कुल 250 रुपए की तेजी आई थी. चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में काफी बढ़ जाने से चांदी में 300 रुपए का उछाल आया और ये 40,500 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची. कारोबारियों के अनुसार सोने की कीमतों में बढ़त निवेशकों द्वारा रुपए में कमजोरी के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदने से आई. इसके अलावा मजबूत वैश्विक रुख से भी सोने को बढ़ावा मिला. न्यूयॉर्क के बाजार में सोना तेजी के साथ $1,292.03 प्रति आउंस पर था और चांदी $15.60 प्रति आउंस पर थी. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है. आप आई सुषमा, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू सोनू. And before we close, a reminder of the headlines. 9th International Micro Irrigation Conference begins in Aurangabad. Minister for Water Resources Nitin Gadkari says micro irrigation is a game changer in agriculture development. Benchmark domestic stocks close almost flat, and British Prime Minister Theresa May to face no confidence motion following Parliament's rejection of Brexit deal. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra. Market Mantra.